Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaptu, Saha Vijam Karavabhoi, Tejasvi Navadhidamustu, Ma Vindisha Bhavoi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bhadram Karne Vishnuyama Deva, Bhadram Pashim Akshavir Jajatra, Sthiroi Rango Stushtavanshas Dunubhir, Veshamo Devahitam Jadayigo, Sang Gacchadam, Sang Padadam, Sang Bho Manangsi Janatam, Deva Bhagam Jatha Buddhi, Sanja Nana Upasati, Samano Mantra, Samiti Samani, Samanang Mana, Sahajittamesa, Samanang Mantram, Abhimantra Eva, Samaneno Bho Bhavisha Juhomi, Samani Bho Akuti, Samana Hridayani Bha, Samana Mustu Bho Mano, Jatha Bha Sahasati. Tejo, Osi Tejo Mai Dehi, Birjam, Osi Birjam Mai Dehi, Balam, Osi Balam Mai Dehi, Ojo, Osi Ojo Mai Dehi, Mannu, Osi Mannu Mai Dehi, Saho, Osi Saho Mai Dehi. Om Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sham Sutena Gavinani. Today is a very special occasion for Veda Parishad. We have been reading about the sacred texts and textures, the Upanishads, the Tantras, occasionally other subjects also. But it is very rare that we find somebody who can speak out that language as a person, as a matter of his own experience. It's a great fortune indeed that we have come across such a person, and that I am giving my own impression. You will certainly come to have your own impressions of your own. And it is we are grateful to him, deeply grateful to him, immensely grateful to him that he has agreed to address us at a session of the Veda Parishad, a small organization as it is. And we are also grateful to his bhaktas and associates who have made all arrangements and made it possible for him to be present here. I do not like to take much of your time, but I will be failing in my duty in the formal sense if I do not say something about it, which is a great problem, because apart from the fact that he was associated with the teaching institution in Calcutta in some time, nothing much is known about him, and nothing much is known about the sadhana. But as Tagore says, Thainai Choto Shaturi, Amari Sonar Dhan means a Guri. We are interested in what he can, very frankly, very selfishly, are gathered here to comment what your address is and what we can get from him and what he will give to us in his kindness. So I will not say much about him, except that you will be able to judge him from what he speaks. And he speaks, I have been there 4 or 5 times, my own personal experiences, he speaks with great spontaneity. He speaks, that's all. About what he speaks, I can only read out a few portions of the Shanubhava Sudha, a book, first book which has been published about by doctors. He insists that everything is Shanubhava. The feeling and the knowledge must come from within and from by association with somebody who is within, who is complete, who is immanent, who is without form, who is without shape, but nonetheless who is ruling the entire universe by his, who is Shasta. And once we go to him, once that feeling comes, everything is realized simultaneously, completely, automatically. I will just read one portion of it. Mr. Chaudhary, we have been discussing Brahma Shatta Jagat Mithya. So we have been discussing that. Now, this much Baba Thakur says, very interesting, very great reconciliation. When you look at from the point of view of Brahman, it is all the time true, always true.
Because when Brahman is suffusing the existence, it cannot be false. It is false. It is totally true, complete, and reeking with infinity. As Paramahamsa they say that Chaitanya Jala Hoya. It's suffused with infinity. But so as soon as we see it detached, Jagat, when you see Jagat apart from Brahma, it is Mithya. Because as he says in inimitable language, Brahma Bode Jagat Satyam. I think you can. Brahma Bode Jagat Satyam. But Jaro ba Achaitanya Bode, Indriya Drishtite, Vaichitrama Nanatva Bhutya Drishtite, Ya Shatrupe Pratyaman Holo Mithya. Karon, Nam Rup Parinami. Parinami means it changes. It takes changes shape, continuously changing shape. Kintu Satya Brahma Atma Holo Aparinami. It stays. So when you see as a part of the Brahman, suffused with Brahman, it is true. But when you say detached from the Brahman, when you lose our Sriti, of course it is false. False in the sense it changes. There is nothing fixed about it, no constants about it. Well, I will read out one or two sentences, one or two more portions about what he says, and then the man passes to 4 stages, maybe more. But first stage is a skilled man. He has known the artifacts. And second stage is a scholar. Third stage is a philosopher. He goes into the mysteries. And fourth stage is a seer and realizer. And I should say, from our own experience, not everybody should pass through all these stages at different parts. There are people who come to realization because of something, Brahma Siddha, as we see. And about the Vedas, he says that Veda comes from the word, comes from the feeling of Vedana. One is eager to know and pain, you are dying for lack of knowledge. And when that stage comes, you come to a vision of knowledge which is Ved, which is afterward. And he always says that adjustment, not adjustment. Truth always changes its jacket, coloring, design, pattern, style, technique, but itself remains the same. That he says, অতীতের শাস্ত্রকে যুগোপযোগী করে ব্যবহার করলে অধিক ফলপ্রদ হয়, which is the fundamental tenet of Hinduism. I will not about sannyas, he says, you may need a Bhorish sannyas to establish the Antar sannyas. Once the Antar sannyas is established, you may have the Bhorish sannyas, you know. Recently we are discussing about Mandir. He was wearing sannyas for a long time, but after some long years, he discarded it. The theory was, the thing was that he had attained renunciation or attained knowledge on his own, so the external formalities were not required. I would not like to describe Baba Thakur by his own sentences. He will describe himself. Sir, I request that you kindly say whatever you want to say for our time. Yasmat sarvam yashu sarvam Sarvata Shriya Tat Sarvam Shakya
Jnana Ananta Shvatam Nitram Adyanta Vihiram Gaganopamam Vajyabhantarayajam Swasam Veda Devasayam Nityam Shuddham Bimalam Achalam Akhandam Avibhaktam Niskalam Nirmalam Sarvadhishtanam Abhayam Nitya Vartamanam Rupasya Rupam Namasya Namam Bhavasya Bhavam Buddhasya Bodham Swasam Vedam Swambhava Deva Sayam Swarubhava Deva Sayam Swarubhava Deva Sayam. Brahman, Atman, God, truth, Satyam, Shivam, Anantam, Advayam. All these words are very familiar. These words are not made. These are spontaneous, revealing expressions of the reality itself, which is beyond space-time, cause and effect complex. And in the course of revelation on the existence absolute, what happens? The space-time causation takes shape. How? It is found when we look at the infinite water of ocean. There are waves, ripples, bubbles, foams, rising, dancing, playing, and again getting dissolved. These are the spontaneous course of the same substance which is called water. Without any permanent background, the foreground is meaningless. So it is said that every movement presupposes some
fixity. Every form has some name. Every name has some idea. Every idea has some experience, consciousness. Now, Chaitanyam Shashvatam Santam Bhumatitam Niranjanam. What is Chaitanyam? That which illumines itself as well as all that is the part and parcel of its illumination. Jnanam, Gyam, Jnanagamam, Sarvasva Vedi Drishtam. The only reality is of the nature of pure knowledge or consciousness. It is uncreated, self-begotten identity or entity and reality which was before the creation had taken shape, which exists by its true nature because it is of the nature of existence. Osti, sthiti, jadosti tadevo bhati manam. Bhati manam means it is of the nature of luminosity, cognitivity. It does not take any support from elsewhere because it is the only substratum which is all perfect, ever pure and all embracing. The essence of all. That is why it is called eternal substratum. Nityam Shashvatam Shakyam. Akhanda Purnam Upadanamekam. Only substance, only reality, without which nothing is possible. Just like the background screen of a cinema, on which all the projections of cinema, pictures are projected and made unified, polished into one series. Pictures are all still. If the background scene is taken away, the foreground sceneries are not possible to experience. Now, in the beginning, the whole words revealed from within. How? Because it is the true nature of the reality or the same substance which is ever revealing. Swayam Prakash, Swayam Purna, Swasang Vedyam. It reveals, illumines itself as well as all the variations of its illumination. Swayam Prakash, Swayam Prabha, Swasang Siddham, Swayam Purnam, Ekamevam Advayam. Because it has no change, it has no duplicate, no substitute, no alternative. Though all its revelations, manifestations appear to be diversified, still the substance remains the same. That is why it is called Atman or Atman, that which cannot become Tamo. Tamo means inert, passive. All passive objects have also some existence, and that which has any existence must have some form, either gross or subtle or causal or supracausal. All these are the spontaneous expression of the same substance or reality which we call Atman or Brahman. Though Brahman or Atman, the reality has no change at all, still it is of the nature of spontaneous revelation. Swayam Prabha, Swayam Prakash, Satyam,
bhati bhayam, asti bhati priyam, sat chit anandam. What is chit? That which illumines itself as well as all other. That means all the expressions or manifestations together. Why priyam? It is always infinite. Though it appears to be finite, it never loses its true nature because it is consciousness, the reality. Reality means that which never loses its true nature. That is why it is reality. It is never absent. It cannot be. Sat means that which exists. Chit means that which illumines. We say we are. How can we know we are? Because we exist. And what is the truth of existence? That we know that we are. So the existence and its cognizability or luminosity are identical, is inseparable. Sat Chit, Chit Sat. And what is Sat is infinite. Akhandam. What is Akhandam? Nityam. What is Nityam? Chit Swarupam. What is Chit Swarupam? Anandam. What is Sat is Chit, what is Chit is Anandam. Because it is infinite. So now, how the Ninanandam or miseries or pains or sufferings are experienced in life? These are nothing but different expressions of the same one substance which we call consciousness. Without consciousness, there cannot be any experience in life. What is experience is consciousness. What is consciousness is experience. Before the creation comes into being, what was the state? It was serene, passive, or a state which is beyond the range of our intellect, which is modification or some expressions of becoming, that is Prakriti. It is the dynamic part of the inherent power of the same reality, which is called the Supreme Being. Being and becoming are but one, just like two sides of a coin or two pages of or two sides of one paper. It is inseparable. For example, see, the front side of a man has got so many organic functions, but the back side has such. But the man is one. If we dissect a man from the outside and backside and front side, then the man cannot be living, cannot be functioning. So we cannot take away the becoming part from the being or being from the becoming, as we cannot take away the light and heat of the fire. We cannot divide the heat and light of the fire. Though light and heat both are the inherent power of the fire. So, what is called reality is Brahman or Atman in Sanskrit, God in English, Allah in Arabic. Similar words are there having the same meaning. To whom? To the essence of the words, which is life. Life is God and God is life. Why life? Four letters are there. L-I-F-E. L-I-F-E. E is the last. E-F
yet from the backside. I will come step by step. How the one reality appears to be manifold, and appearing manifolded remains the same. That is the beauty of the reality. Sattam Sundaram. Why it is called Sundaram? Because it unfolds its truth and glory in manifold manner. Otherwise, it is staticness. It is a dead one. Brahman cannot be a dead one. It is the life of all life. Atman, it cannot be Taman, inert. Atman, and very sweet meaning in different way. Atma means Atman. Who calls it? Mother in the form of child, calling the mother out of love. Why love? Because love, L-O-V-E, E-V-O-L, eternal virtue of Lord. That is love. And love pervades all. That is why Lord remains always Lord. Why and how? Because it is the embodiment of all love. Ever blissful because it is all infinite. Bhumaiva Sukam. Now I am to say some words before going in detail. I had no opportunity to read any philosophical scripture or religious scripture in my life. Nor I had any chance to listen to all this from some persons. This life had to struggle. It was made so that it had to struggle. So, only experience I had from the very birth of this physical body, though the self within experienced the first thing which is very rare, never heard from the scientific laws. The self of this and the self of others are not many but one. And it experienced the very first moment of conception of this body by noble couple, father and mother. Without father and mother, there cannot be any physical body. And the self within had experienced twice the death, what is called in word, death before 3 years. Because some luminous body appeared, that luminous body having the same resemblance identical with this one. Took away me from this body and I came out of the body. And it interpenetrated all the dimensions of creations, one after another, like one rocket. So I experienced and envisioned so many suns and interpenetrated the suns directly. And what happened? Galaxy after galaxy passed away. Again, that luminous body smiled at me and stopped. What happened? It again came back.
and entered into the body. Again, took goodbye. That means it dissolved within. Twice I experienced this thing. And next, the second one is that in a state of samadhi, the entire universe dissolved, but my existence didn't. Infinite existence, only and nothing else. And in that state, how many hours passed? I have no record. Many a times, my samadhi extended more than 7 days, 12 days, or 15 days. And again, the body consciousness started functioning. Now, what I need to say, I had no scriptural knowledge, no religious conception, but I had bitter experience in life, the experience of pains and suffering, poverty, and miseries. This is common to all people, all lives. It is only Vedana, the miseries, pains, which is the common factors in life. And that is the only asset of this life. And that Vedana open its reality or secret. How? You know, Vedana, 3 letters. It is the expressions of the same consciousness. Without consciousness, there cannot be any experience of Vedana. Vedana is particular expressions of the consciousness. In the 3 letters, the secret remains covered. In the first stage, I had the experience of Vedana, that means suffering, miseries, troubles, pains from different angle. I embraced that because I have no alternative. Only one word came out from within. Ma. The only single letter, only one word, which is the fulfillment of all laws, all senses, all ideas that is ever possible for the greatest intellect to experience in life. It is the source of all, which is immeasurable, aporimeum, atarkamurtim. It is beyond argumentation, beyond measure, beyond limitation, beyond any condition or convention. It is the source of all. The source of all. That means the same background. It is all positive, all negative, and beyond. So, this word automatically came out from within. So, my Guru is Vedana, which is common to all. And that Vedana unfolded, Vedana. That means inner experience. Gradually increased from within, Vedana. The understanding from different angles. And every time the only word came from within, Ma.
whatever happened in this life, and inner meaning developed from within. Innocent voice started playing from within. Sasang Vedam, Anuvedanam. So from Vedana comes the next step, Vedan. Vedana, the Akar, that is the outer form dissolved. Inner form, Vedan. Third stage, no dissolved. What remained? What you practice here, Veda. That is Ma. Vedo Mata, Vedo Shruti, Upanishad Vidya. That is Guru Vani. Mahasaraswati, Vidya, wisdom. And that wisdom is the self itself. The Lord, God, Brahman, Atman, and what not, everything in life. Life is the passion of the Lord, Brahman or Atman or God. Life is the passion. It is Satyam, Shivam, Sundaram. Sundaram. Life is Sundaram. Without life, God is meaningless. Naro Leela, Uttam Leela. There was also pray to have human form, because it is only the human form in which the divine can reveal his all glories, nobilities, beauties, purities, sanctities, unity of consciousness. This is called self-knowledge. Without life, we will realize it. And life is the best expressions of the truth and reality. Hence it is said, very rare three things are. What? One is human life. But human form is not all. I tell you, human life. Not human form is enough. We have got human form but not human nature up till now. We have to acquire it by virtue of our sadhana or merit. We have now the subhuman nature with human form. That is why there are so many chaos in our social life. We have to develop the human nature in this human form. That is not all. After having the human nature in human form, we must try for superhuman nature in human form. That is not all. Next step is, after the superhuman nature, is the divine nature in human form. And that is not the end. The divine nature in human form aspires to reveal from within in his all perfect super divine nature, which is called Absolute. That is Vedam. That is why it is said, Veda, Veda, Veda. That you listen, it is your glory, your self-glory. It has revealed here, no doubt, because I have no knowledge, I have not tried anything. कोई साधना नहीं किया हुआ, लेकिन सब कुछ आप आ जाता है। बाक खुद भी आ जाता है, क्योंकि बाक ब्रह्म है। बिना ब्रह्म तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ना बाक, वाक कहां से है? पराक्षर। ये तो हम देख लिया, एनविशन किया हुआ। समाधि के बीच में जो कुछ शास्त्रों में जो कुछ भी है, स्क्रिप्चर में सब कुछ दिखा दिया, इसीलिए हमारी स्पॉन्टेनियस आता है अंदर से।
बाहर से कुछ भी हम नहीं लिए। बाहर में क्या है? shadow है। Speak, a book cannot talk. It is the revelation from within. इसलिए कहते स्वाध्याय, स्वस्वाध्यायम, स्वाध्याय अपना हृदय से भी ये आवाज आ रहा है, बाहर से नहीं। चिदम्बरम चिदाकाशम, कहाँ है ना? At the core of our heart. One Bengali son can give you some idea about this. I will translate this. হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, পরমে পরম আপনে আপন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, নিষ্কল নির্মল উজ্জ্বল ভাস্বর, নিষ্কল নির্মল উজ্জ্বল ভাস্বর, সত্য শিব সুন্দর, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, শান্ত গগন পম সর্বসম, শান্ত গগন পম সর্বসম, অন্তর বাহির শূন্য অনন্য নিরূপম, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, নিত্য শুদ্ধ নিরাভাস, নিরাকার নিরঞ্জন, নিত্য শুদ্ধ নিরাভাস, নিরাকার নিরঞ্জন, নিত্য বোধ চিদানন্দ, নিত্য বোধ চিদানন্দ, স্বানুভব দেব স্বয়ং, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবাই, পরমে পরম আপনে আপন, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন,
আকাশে বিরাজে সবার। অখণ্ড ভূমায় এক নিত্য পূর্ণ, অখণ্ড ভূমায় এক নিত্য পূর্ণ, শত সিদ্ধ প্রিয় তম তম ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন হৃদয় আকাশে বিরাজে সবার। শুদ্ধ মনে ধ্যানে হয় তার দর্শন, শুদ্ধ মনে জ্ঞানে হয় তার দর্শন, আপন বোধে তার সাথে হয় অভেদে মিলন, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন হৃদয় আকাশে বিরাজে সবার, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবার, হৃদয় আকাশে বিরাজে সবার। পরমে পরম আপনে আপন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম সনাতন হৃদয় আকাশে বিরাজে সবার। This song is clear. Most of the words are Sanskrit words. Everybody can understand all the words. In the heart center of all, exists the infinite reality called Ishwar, Atman, Brahman, God, who is the supreme, parame param, the supreme, and apone apon. That means the oneness of all, the self of all. Apon means self. How? Nishkalang nirmalam, it is taintless, undivided, indivisible. Pure, ever pure, ever perfect. Ujjalam bhashalam, self-luminous. It requires no light for itself, but it is the light of all. Jasya bhasa sarvamidam vibhati. All these words revealed within. The Vedas revealed within, because the Veda Mata unfolded her glory within this heart. She made this life for her own purpose. It is the Sanai, means the eternal fruit for the eternal law, and revealed the entire truth. This is recorded by so many realizers in the pages of the Vedas. Yameva vrinute tena labhya tasya esaihi atma vrinute tanusyam. No life can realize him or her or that reality or the self until unless the self favors or showers its grace. It reveals from within. ज्ञान से नहीं होता है, बुद्धि से नहीं होता है, और जोर से जबरदस्ती से नहीं होता है.
ये तो बाहर का प्रकृति का खेल है। प्रकृति कौन है? उनका प्रकाश धारा है, इसमें चेतन है, लेकिन अंडर कंडीशंस। क्यों? प्रकृति तो खेल कर रहा है ना, वो इम्प्रेशन आफ्टर इम्प्रेशन। देखो समुद्र का सामने में जाने से क्या मिलता है? हमारी सामने में पानी की पानी है, वो उसमें डाइव देने से क्या मिलता है? अंदर में पानी है, ऊपर में पानी है, पीछे में पानी है, सामने में पानी है, दाने में पानी है, बामे में सब पानी पानी है। आकाश में क्या है? यू कैन नॉट डिवाइड इट, यू कैन नॉट बर्न इट, यू कैन नॉट कट इट। देयर इज नो वेपन, द न्यूक्लियस वेपन हैज नो पावर टू remove the sky. It is futile. So, बाहर से जितना भी साइंटिस्ट लोग आता है, ये तो मूर्ख आदमी है, देखा बड़ा कुछ नहीं जानता है। लेकिन इसको सामने में जब वो लोग अपना अपना ढंग से कुछ भी बता रहा है, बताते तो क्या कहता है अंदर से? तो देखो बाबा, पहले तो अपना को तुम जानो, उसको बाद look at yourself, see first yourself, then others. If you don't see yourself, you are a blind one. If you don't know yourself, but try to know so many things, you are ignorant. Because वो जितना कुछ भी तुम जानो सब बेकार जाएगा बिना अपना स्वरूप। अपना स्वरूप को पहले जान लो, तब तुम्हारी सब फिनिश्ड जानने के लिए। तो लोगों को कहा कि तुम लोग एटॉमिक एनर्जी लेकर के कितना भी रिसर्च कर रहा, लेकिन आत्मिक एनर्जी का तो कोई कुछ खबर नहीं रखता तुम लोग। What is that atmic energy? They cannot understand. They cannot give any word against this. What is this atmic energy? What you are? Are you matter or are you spirit? Are you non-self or are you self? Are you consciousness or are you non-consciousness? What? Tell me. If you say you are non-self, then how can you talk? How can you understand? And if you say that you are self, then you require nothing at all. Your self is all perfect. It is futile, useless. When we search for truth, being the truth ourselves. कैसा? माने बताइए हमको, देख कैसा बुद्ध का वहां भी खेल चल रहा है सारी दुनिया में। कैसा? को देख सेल्फ होके के खुद भी सेल्फ है, वो सेल्फ के लिए ढूंढ रहा है। कैसे? A self does not require another self for itself. How is it possible? Consciousness does not require another consciousness for itself. Is it possible? Never. If anybody says it is possible, then I will tell one thing. If water says I am thirsty, it is fantastic. If fire says I am feeling still, if wind says, I am exhausted, tired. If the sky says, I am bifurcated, divided. If the ground says, Mother, Earth, so I am overburdened. All these are meaningless words. So, the search for truth for a self is meaningless word. Who is searching for whom? Through what? And how? It is funny game, only fantastic game. This is eternal game going on the existence absolute. The consciousness is playing. It is dancing, playing in the positive role and negative role, both. So, it is the dramatist itself. It is the drama itself. It is the actors acting, the spectators, the experiencer, and the result of experience, and all together. Then what remains? This is called self-knowledge. This is called reality. This is called Atman. So, none of you can prove yourself separated from the reality or reality from yourself. You are self, you are divine. You cannot be undivine. You are experiencing divine things through your mind, intellect, senses. These are the passion of game. When you are tired, you take rest. You don't like to play. Then another part of game begins. How? We go to sleep. What we experience?
Practically nothing. In sleep, we say, not knowing state. We could not know anything. We had a very nice sleep yesterday. This is our experience. That is the negative form of our experience. We cannot experience our absence. Some foreigners asked me, please tell me in a nutshell on your way of realization. And the realization has no way. It is. It is. It is. I-T, it. I means I, T means thou. Is means I means infinite, S means self. Infinite self playing in the form of I and thou. Without I and thou, consciousness cannot play. Soham, Shivoham, Aham Brahmosmi, Prajnanam Brahma, Gyan Surupa Kevalaham, Sattam Shivam, Ekaham. All these are Aham, Aham, Aham. And thou, भक्ति में कहता है तू जो कुछ है तू है, तेरा है तू है, ये तू भी बात करता है, तू भी आवाज करता है, तू भी सुनता है। न तो खेल क्या, वही एक्सपीरियंस है, कॉन्शसनेस की खेल है। Not that only one man will realize the truth. It is impossible. Everybody is here realizing the truth because all are the manifestation of the same reality. पानी में तो पानी है, तरंग लहरी जितना भी ढंग, जितना भी उसको आकार विकार हो सकता है, लेकिन पानी तो पानी है। तो हमारी इसमें सब में तो कॉन्शसनेस ही है, बिना कॉन्शसनेस के कोई भी नहीं है। उसमें जितना भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं आदमी, कोई बात नहीं है, वो तो खेलने के लिए लगा सकते, फिर भी काट देता है। लेकिन समाधि एक चीज है, वो बताने के लिए हमको टाइम लगेगा। एक दिन में वो एक दिन के बाद के साथ समाधि लगाने से मुश्किल आ जाएगा। तो समाधि तो इज नॉट सम एफर्टफुल एनीथिंग, इट इज स्पॉन्टेनियस। ये जो बात आ रहा अंदर से, हम देख रहा विटनेस के फॉर्म से, हमारी कुछ करने कहने पड़ते, कोई मेहनत नहीं है, कष्ट नहीं है। दिस इज समाधि। दैट मीन्स it is the state of innate nature, not of the consciousness. Consciousness has no state. It is beyond state, ever transcendental. उसके लिए तो कोई डिविजन नहीं हो सकता, लेकिन डिविजन जब होता है उसको becoming part, that is inherent power. This is called nature. वो नेचर का दो रूप है, एक तो है बाहर का आउटवर्ड और एक है अंदर का इनवर्ड। दोनों बराबर इकट्ठा होके ये नेचर है। इन नेचर में क्या होता है ना, प्रकाशं करोति इति प्रकृति, प्रकारं करोति इति प्रकृति, प्रमाणं करोति इति प्रकृति, प्रज्ञानं करोति इति प्रकृति, प्रबुद्धं करोति इति प्रकृति, प्रलयं करोति इति प्रकृति, प्रशांतं करती थी प्रकृति। ये प्र उपसर्ग है, क्री धातु है, क्रिया शक्ति, शक्ति की साथ प्रयुक्त हो गया तो क्या किया, वो ढंग बनाने लगा। कैसे, जैसी इच्छा, खुद भी विल है, इसीलिए मैनिफेस्टेड हुआ। कैसे, सात ढंग से। ज्ञान का सप्त भूमि होता है। पहले नंबर तो है क्या, महत तत्व है, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस। सेकंड है अहंकार तत्व, कॉस्मिक व्हील, इरेजिस्टिबल व्हील और इगोइस्टिक प्रिंसिपल। और थर्ड है 5 बेसिक एलिमेंट्स, ईथर, स्काई, एयर, fire, water, earth. These 5 elements are basic elements, subtle elements, which cannot be experienced with these gross elements. When these 5 elements become grossified through Pranchikrita process, then the gross 5 elements take shape, and the gross universe takes shape from the union or combination of the different proportionate combinations of the gross 5 elements. And subtle, from subtle
5 elements, the subtle universe. These are the philosophical conception of our creation. But all creations are possible only when there is background consciousness, the life. Now, how one can experience one's own existence? By one's own self and by none else. आप से अपना, you know your existence better than anybody else. So, for the awareness of your existence, you require the knowledge of your existence first. You cannot experience your absence. The consciousness can experience so many things, but not its own absence. एक साइंटिस्ट के सामने में वो कुछ भी ऐसे पूछा था कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ पॉजिटिव प्रूफ, वो लोग तो पॉजिटिव प्रूफ मांगते हैं. व्हाट इज द पॉजिटिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, and that you can you deny yourself? Who is putting the question? Is it somebody else other than your own self, or is it your own self? Tell me. तो देखो साइंटिस्ट लोग जो कुछ किया हुआ तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया हुआ, सब्जेक्टिव किया नहीं कभी. They have not researched on the subjective experience. Whatever they have experienced, all are objective analysis, the physical analysis, atomic analysis, electronic analysis, nothing of the consciousness. Though without consciousness, they cannot understand anything. But they do not know how consciousness plays within. They know everything with the help of consciousness. Not only they, but also all human beings. But we are not aware of it. Why? Because our attention is always engaged towards the objective phenomena. That is what we appear to be, not what we are in reality. If we want to realize our existence in reality, then we have to look within. Oh, अव्यक्त चक्षुर. That means sense control करने के बाद. कैसे? सम दम उपरोति इच्छा और क्या? श्रद्धा समाधान षट संपत्ति चाहिए. ये बिना तो ज्ञान बेकार है. त्याग बिना तो ज्ञान नहीं हो सकता. त्याग बिना जो ज्ञान है वो तो ज्ञानाभास है. ज्ञानाभास कैसा है? जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी में है, वो तो रिजेम्बलेंस एक ही है, रिफ्लेक्शन ऑल द सेम, बट नॉट द रियल सन. सिमिलरली our knowledge and ourself should be identified. When we divide it due to the delusion of our intellect, we do a mistake. Why the delusion comes? It is due to the sense of otherness of the experience. Otherness comes when we forget our true nature. Why we forget? We have desire. When we have no desire, there is no enclosure. It is the desire that makes enclosure, that means covers the self for a time being. This is lower nature. So, the same self becomes hypnotized by its self-generated lower nature. And again, when it dehypnotizes itself, it becomes the same self. और पहले self था. It was the self, it is the self, and it will remain the same. You will never lose your true nature, but you will lose many times, 1,000 times, innumerable times, your outer nature, objective nature, phenomenal nature, your physical nature. Because these are all changeable. These are called बहिर्प्रकृति सपन. ये तो सपन है. किसका सपन? मन की सपन है. मन को उल्टा करने से क्या होता है? नमो, मनो नमो. नमो का मतलब पहले क्या है? नो मोमो, मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है.
ना हंग देहो न इंद्रियाणि अंतरंगं न अहंकार प्रणवर्गो न बुद्धि द्वारा अपत्त क्षेत्र वित्तादि दूर साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिव केवलम। प्रत्यगात्मा शिव केवलम। रज्जुज्ञानात् भाति रज्जुर्यथा हि आत्मज्ञानात् आत्मनो हि। देशिक उक्ता शिव। ज्ञानी गुरु ने हमको बता देते क्या, अरे तुम किसको ढूंढ रहा है? Being a self, you are searching for yourself. What a funny thing. Being divine, you are questioning for some divine. नहीं, अपना को देखो। कैसे? इंद्रिय से नहीं, मन से नहीं, अपना से अपने को देखो। अपना से अपने को देखो, अपना द्वारा अपने को देखो, आपन द्वारा। इसीलिए परम में परम, आपने आपन, वो गाने में था ना। तो ये क्या? शांत गगन पम। योर सेल्फ इज infinite, serene, peaceful, like the infinite sky. Gagana pama, akasha sama. You see, there is no form of the sky. It is all-pervading reality. This is called Bom Shivam. Shaktam Shivam, this is. Without this existence, you cannot create anything. You cannot have any experience. आकाश को तो हटा नहीं सकता कोई। आकाश तो शिवम, बम, वहां बम, परम बम। इसमें क्या होता है? एनर्जी प्ले कर रहा है ना। जितना भी शक्ति है, पंचभूत का आधार, वायु है, एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है, उसमें एनर्जी का फंक्शन होता है। तो एनर्जी का फंक्शन के लिए तो एक एग्जिस्टेंस चाहिए। दिस इज शिवम। इसको हमारी जो पिक्चर है ना माँ की, वो शिव का ऊपर में एनर्जी मदर गॉडेस काली डांस कर रहा है। दिस इज अ सिंबल। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसमें क्या दिखाता है लोग एटम में? एटम का फंक्शन क्या है? उसमें तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। यही तो है, और क्या है? प्रोटॉन तो है लाइफ एनर्जी, परा प्रकृति, जीवभूत सनातन जया इदम धार्यते जगत। और परा प्रकृति कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, मृत्यु, पृथ्वी और मनोबुद्धि अहंकार। इन वन सेंस, इन अदर सेंस सत्व रजतम। ये तीन गुण और पांच भूत इकट्ठा करके एक अष्ट प्रकृति कहते हैं। हम उसको प्रकाश का रूप से अलग ढंग से अनुभव किया हुआ, वो जो बताया पहले, प्रकृति किसको कहते हैं। लेकिन ये तो फंक्शन एनर्जाइज्ड कॉन्शसनेस। तपसा चीयते ब्रह्म तस्मात् अन्नम जायते। अन्नम का मतलब क्या है? मैटर। मैटर किसका फूड है? लाइफ का फूड है। हम लोग क्या करते हैं? वी टेक मैटर, फूड मीन्स मैटर इन वन फॉर्म ऑफ अदर। लाइफ का एक फॉर्म है मैटर, एक फॉर्म है लाइफ। प्राण से प्राणम, प्राणेन प्राणम, प्राणस्य प्राणम, प्राणात् प्राणम, प्राणे एनो प्राणम, प्राणे प्राणे प्राणमयम। यही फॉर्मूला सत्य में लगाओ। सत्तात् सत्यम, सत्यस्य सत्यम, सत्येन सत्यम, सत्ताय सत्यम, सत्य निमित्तम सत्यम, सत्ताय सत्यम, सत्य निमित्तम, निमित्तात् चतुर्थी होता है। और सत्य सत्य सत्यमयम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सत्यम। और दूसरा फॉर्मूला है सत्य अपवर्ड, truth upward, truth downward, truth backward, truth frontward, truth in the leftward, rightward, inward, outward, allwards. Truth, ये तो सत्यम शिवम अनंतम अखंडम, ये है सत्य का परिचय, आइडेंटिटी। हम लोग अपना परिचय क्या दे सकते हैं? सत्य और असत्य। If it is truth and real, then what more do you require?
we are playing the foul game with our own self. How? We say we know something and we know not many things. इसीलिए दोनों को बराबर करने के लिए, to unify them, what we require greater personality before us. इसीलिए कहा कि मनुष्य जीवन तो बहुत मुश्किल से मिलता है. मनुष्य फॉर्म नहीं, मनुष्य जीवन कहा मैंने, क्योंकि हमारी बाय वर्च्यू ऑफ मेरिट जैसे हम मनुष्य जीवन हमको मिला, और बाय वर्च्यू ऑफ डिमेरिट हमको क्या हो जाएगा, मनुष्य जन्म से हमारी फर्स्ट डिग्रेडेशन आ जाएगा, एनिमल लाइफ आ जाएगा. तो इसीलिए कहा जो हमारी सामने में तो कितना स्टेज बाकी है, अभी क्या करना. हमारी धर्म है एक साइंस. धर्म क्या कहते हैं कि तुम by the law of oneness become unified with the oneness, identified with the oneness and realize your oneness eternally. यही है हमारी सामने में वेदांत की असली बात. नॉलेज ऑफ वननेस, वननेस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ वननेस, वननेस ऑफ साइंस. ये कैसे? बाहर में जो कुछ हम रिसर्च करता है ये तो नी साइंस है, अविद्या है, माया है. बाहर में जो कुछ करे इंद्रिय से करता है ये तो नी साइंस, इसको कहते हैं अविद्या. इसको ऊपर में क्या है? साइंस, ज्ञान. अज्ञान यह है ज्ञान. ये ज्ञान क्या है? अज्ञान के साथ जो कुछ लगा रहे, अज्ञान को मालूम होता है जिससे, वो है साइंस, नॉलेज, ज्ञान. इसके ऊपर में है विज्ञान, प्री साइंस. इसके ऊपर में है कॉन्साइंस, विवेक. बिना विवेक तो सत्य को, अपना स्वरूप को भी नहीं रियलाइज कर सकता. तो विवेक कैसे आता है? त्याग से. त्यागात् शांति अनंतरम. क्या त्याग करेगा? मेरा मेरा मेरा. इसीलिए कहा जो मन को उल्टा करने से क्या होता है? नमो. दैट इज ए स्टार्ट किया, यही है धर्म. नमो न ममो. हमारी कुछ भी नहीं, बंधन भी नहीं, जन्म भी नहीं, हमारी मृत्यु भी नहीं, जरा भी नहीं, व्याधि भी नहीं. ये तो है सपन. किसका? मन का, आत्मा का नहीं. आत्मा का लिए कोई साधन नहीं हो सकता. स्वेदने का नियम मध्य अवस्था. आत्मा का लिए कोई साधन नहीं हो सकता. स्वेदने फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन दैट कैन नॉट बी एनी कंडीशन, क्योंकि आत्मा तो सेल्फ कॉन्शियस, द सेल्फ कॉन्शियस एंटिटी. It is already realized, self-realized entity is self. Conscious के लिए कि दूसरा consciousness लगता है कभी कभी. वो जब सूर्य आफ्टर सनराइज क्या करता है, कोई आदमी कोई लैंटर्न लेकर के, हरिकेन लेकर के सूर्य को देखने जाता है, तो उसको बुद्ध आदमी कहते हैं ना. तो ऐसी है आत्मा के लिए क्या लाइट चाहिए, क्या साधन चाहिए? हमको तो आता ही नहीं. आत्मा तो है ही. That is the source of all, that is the light of all, that is the existence of all, that is all in one, one in all, one in one and beyond. Without that one, nothing is possible. So, अपना को छोड़ के जब हम कुछ भी सर्च आउट करता है, वो तो इंडिया का खेल है. इसीलिए कहते हैं कि इंडिया का साथ इंडिया का क्या लड़ाई होता है ना, उसमें है सू एंड पू, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यही तो देवासुर का लड़ाई है. लेकिन आत्मा का लिए क्या लड़ाई हो सकता है? वो तो एक व्हेन सेल्फ इज वन. जैसे आकाश को हम नहीं जला सकता है, नहीं इसको काट सकता है, आत्मा को कैसे? उसको तो भाग नहीं कर सकता. तो ये जो देख इतना भी है, ये तो है इंद्रिय से. अभी आग बंद करो, कोई एक ही भी पर्दा आ जाएगा. उसको मन का दर्जा बंद करो, देखो अपना आत्मा भी आ गया. तो त्याग करना का है, मेरा को त्याग करो, तो मन का खेल है. ऑल दीज आर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल. सो इंटेलेक्चुअल से ऊपर में है विज्ञानमय कोश जो है, उसको ऊपर में है आनंदमय कोश. आनंदमय कोश को ऊपर में कौन है? निष्कलंक परम ब्रह्म आत्मन. वही है अपना स्वरूप, खुद सेल्फ बैठा है. सबको अपना हृदय में आत्मा को रख करके हम लोग आत्मा को ढूंढ रहा है. कहाँ है हमारे आत्मा?
अपना खुद आंख बंद करके हम कहते हैं हम नहीं देख सकते। तो एक चीज हाथ में पकड़ करने के लिए हमारे प्रकरण क्या लगता है, एक हाथ लगता है ना, दोनों भी हिम्स लगता है। इसको शक्ति प्राण का फंक्शन, मन का इच्छा, बुद्धि का डिटर्मिनेशन, इतना इकट्ठा करके तब हम इसको पकड़ के रख दिया। ये तो है बिकमिंग की पार्ट, हमारी नेचर की फंक्शन। लेकिन ज्ञान का फंक्शन क्या है, छोड़ दिया, क्या लगा हमको बताओ, कुछ नहीं। त्याग का लिए कुछ नहीं लगता है, आत्मा तो बराबर के लिए ऐसी है, उसके लिए कुछ भी नहीं लगता है, वो तो सर्वत्र है। तो ये जो सेल्फ है, ये जो आत्मा है, इसको कोई साधन नहीं है। जो कुछ साधन है सब मन की बुद्धि की विकार से होता है, विकार का खेल चलता है। ये एक वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जब आत्मज्ञानी के पास जाता है हम, तो वो कहते हैं अरे क्या तुम खेल रहा है, अभी शांत हो करके बैठ जाओ, प्रशांत रूप से देखो अपना का स्वरूप क्या है। देखो तुम्हारी प्रशांत आकारम भुजग शयनम, तुम क्या किसके ऊपर में सो रहा है, तुम अपना आत्मशक्ति है उसको कहता है भुजंग। इसीलिए भगवान शंकर का हाथ में क्या सांप का ऑर्नामेंट है ना, कंठ में है। सांप क्या है, सिंबोलिज्म ऑफ एनर्जी, शक्ति का रूप है। कुंडलिनी शक्ति कहते हैं योगी लोग, जैसे सब कुंडली ऐसे कॉइल फॉर्म में रहते हैं ना, फिर भी कॉइल जी उसको खुल जाते तो शक्ति का खेल शुरू होता है। तो हमारी जो नेचर है वो कुंडलिनी रूप लेकर के हमारी साथ में खेल रहा है, खेलने दो उसको, क्या बात है। तुम देखो कैसे विटनेस फॉर्म से साक्षी रूप में, आत्मा का रूप है साक्षी, कर्तभोक्त रूप है प्रकृति का। वो जितना भी उसको सामने रखो वो कभी परफेक्शन उसको आएगा नहीं। पावर नेवर सेज इट इज एनफ अंटिल इट बर्न्स इटसेल्फ। वो खुद आत्मा को नाश कर देता है, लेकिन सेल्फ तो नाश नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं देखो मन को उल्टा करने से होता है न मम, मेरा नहीं है, बस फिनिश। ये तो ज्ञानी के लिए, भक्त का लिए क्या है, नमो मीन्स नो माधव लो ले लो, नो महेश ले लो, नो महत ले लो, नो माँ ले लो, इन नमो। इसीलिए पूजा का पहले एक नंबर की नमस्कार करता है नमस्तस्यै, 2 नंबर है नमस्तस्यै, 3 नंबर है नमस्तस्यै, चौथा है नमो नमः। पहले क्या ऑल ग्रॉस कॉस्मिक फॉर्म को नमस्कार किया हुआ, ये दावर दिस। सेकेंड ऑल ग्रॉस शटल फॉर्म को। 3 नंबर नमस्कार है ऑल कॉजल कॉस्मिक फॉर्म को, और एक चौथा है ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को। 4 नमस्कार किया हुआ तो ये भक्ति का पूजा खत्म हो गई। ये तो सरेंडर हो गया। एक खेल है बाबा, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको लीला कहते। लीला जुंजन, परमात्मा तो है इसी, उसको तो दूसरा कोई बराबर तो उसको हो नहीं सकता, कोई राइवल नहीं है, पैरेलल नहीं है, उसको डुप्लीकेट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये जो बाहर में देखता है ये तो खेलने के लिए वो बना लिया। कैसे बना, अपना आभास से बना लिया। जैसे हम शीशा का सामने में कोई बिफोर ए मिरर व्हाट आई सी माय रिफ्लेक्शन, having the same resemblance but not the real. One is real and all resemblances are, all the reflections are unreal. So the entire creations of names and forms are nothing but reflections of the projection of your mind. This is called Vedanta knowledge. That means the self knowledge. जो ज्ञान का दूसरा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान itself is all perfect. ज्ञान के लिए फिर ज्ञान का क्या जरूरी है। And if we are without knowledge, then we will never be able to realize ourselves. Because when there is anything other than the self, it is unsubstantial, unreal. So the sense of otherness is ignorance. It is self-generated nature. जैसे by the heat of the sun, the water of the ocean becomes
vaporized and turns into cloud. Again it covers the sun for a time being. So, ahankar, that means ego, the self-generated nature, covers with the self-light for a time being and plays the game of diversities. Again, it gets dissolved by the light of oneness, by the knowledge of oneness, which is the true nature of the self, the eternal substratum, the only ultimate essence, which lies at the life-pervading truth of all. Everybody is with that light. It is not the created one. It is already there. It does not require any support. You cannot create another self for yourself. It is not possible. Never. You cannot find out any other self other than your own self. No God is there other than yourself. Self is the greatest God. Self-knowledge is the only knowledge, the greatest knowledge, the all-perfect knowledge itself. And the self-delight, joy, is the only bliss which is already with the self, and the self verily is that. So you require no other delight or joy from the outside. And when you think of that, it is the delusion of your intellect. So, the one universal self and one universal self or soul becomes many. That is also the will of that universal will. who says this? The self or the mind? Tell me. I am coming in a very critical stages. All your queries are pertaining to mind, not of the self. Self always is of the same nature. It never changes its true nature. So you have got double nature. One is real, perfect, infinite, and one is artificial, changeable. So all your queries come from the changeable part, and your unchangeable part gives the solution. That self is expressing itself in the Self does not require any support because it is not changed. But the changeable nature requires some support for itself, for the fulfillment of its law. So it is all the function of becoming, function of energism. तपस्या चीयते ब्रह्म, ब्रह्म का तपस्या क्या है? उसको अंदर में तो तपस्या चल रही है, जैसी आग का, जैसी शक्ति का खेल, ये तो शक्ति का खेल है. तो आर यू ओनली शक्ति और एनीथिंग और द रियलिटी ऑफ द शक्ति, वो आपको. I will take over the question. हाँ? I will take over the question. अच्छा. Tapasya Chiyate Brahma. Why does Brahma require tapasya? बिकॉज पहले हम कहा दिया जे स्वयं प्रकाश, सब प्रकाश होता ही तो तपस्या है. आग तो जल रहा है. This is inherent property. Why? Yes. Why should they tapasya? ना इसको तारनीय तपस्या, तप माने तापसिस, that which creates the heat from within by nature. आग से तो तप जलता ही है, आग तो जल रहा है. वो it burns everything but not itself. आग का महिमा क्या है? उसको महिमा ये सबको जलाता है, लेकिन खुद आत्मा को नहीं जलाता है. वो तो खुद ही. तो ऐसे आत्मा सबको प्रकाश करता है, लेकिन आत्मा को ऑल सेल्स का ऊपर में हराम खाली ऐसे कहा जो माँ, खाली माँ, ये आवाज अंदर से आया, फेंट हो गया, समझ आ गया. 3-4 घंटा, 1 रात 2 रात ऐसी पास हो गया. फिर भी जब मामा करते करते हमारी ज्ञान आ गया, तब देखा कि कोई पेज नहीं है. कहाँ से आया, कहाँ चले गया? ये तो एक फनी गेम है. প্রসাদ নিয়ে যাও, নাহলে এখান থেকে যেতেই দেওয়া হবে না. যেখান থেকে প্রসাদ আসবেই. দান আনন্দের আয়োজন করেছে, আনন্দ আশা. ওই যে গানের মধ্যে বলেছে না, রূপে নামে ভাবে বুধে খেলছে মায়া আমার, রূপে নামে ভাবে বুধে খেলছে মায়া আমার, মহিমা তাহার অনন্ত অপার, রূপে নামে ভাবে বুধে খেলছে মামা. জীবন স্বরূপে মাই যে স্বয়ং আপনাকে আপনি করে দর্শন, জীবন স্বরূপে মাই যে স্বয়ং আপনাকে আপনি করে রাস্তা দেন,
অন্তরে বাহিরে জীবনে সবার, অন্তরে বাহিরে জীবনে সবার, সবোধে মা করে ব্যবহারে রূপে নামে ভাবে বোধে খেলছে মায়ামার। ইচ্ছা তাহার করে সৃজন, করে পালন নিধন পূরণ, নির্গুণ সগুণ স্বভাব তাহার, নিত্য সত্তা সাক্ষী আমি তার রূপে নামে ভাবে বুদ্ধি খেলছে মায়ামা। একটা আমি না থাকলে চৈতন্য তো খেলতে পারে না। এই আমি সাক্ষী রূপে মার খেলা দেখে যাচ্ছে। মা মানে কিন্তু এটা তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটাতে কে অস্বীকার করবে? এখন এইটা যেই মানতে আরম্ভ করলাম, আমরা মাকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম, চৈতন্য তার গ্লোরি প্রকাশ করতে আরম্ভ। এইখানে অনেক রকমের প্রকাশ সে করে দেখিয়েছে। অনন্ত অতীতের খেলা, অনন্ত রকম বর্তমানে খেলা, ভবিষ্যতে খেলা, কিন্তু সবগুলি কিন্তু খেলা মনে রাখতে হবে। সকল আমরা রাত্রে we experience so many dreams, but on the break of the dream we come to know that all these are dream experience, not real. Is it not? But it is experience. So is our life dream. Everybody experiencing the same thing in different angle. This much. ठीक है बात? बिना चुकन तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी ऋषि लोग उसको अलग अलग ढंग से बताया that they were the different forms of manifestation of the same self. We are different manifestation of the same self. And in the past we were the same. Now we are acting in the roles of sinner. What is this? It is the acting. But our self is neither sinner nor saint. It is pure consciousness. तो सेंट बनने से क्या, सिनर बनने से क्या? तो एक्टिंग है, ड्रीम ऑफ द गॉड। विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज पॉसिबल। वो चेतन को लेकर के जो कुछ खेल होता है, होगा, यही है उसको आता है। बस राम 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 शिव राम शिव।